Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, IBPS RRB Office Assistant exam was conducted today in two shifts. In first shift, there was very less candidates, but most candidates appeared in second shift. So, in comments also, we got most of the comments from second shift. So, we are viewing both the shifts, but mainly we are taking the second shift because we have got the comments on second shift, most of the comments. Now, if we look at the comments, one thing is very common, that is about the general awareness. The general awareness questions were out of box, and the most candidates have mentioned that they are surprised to see such questions, and they are upset also. And it is quite obvious, when you prepare well and you don't get any question out of your preparation, that naturally frustrate. But at the same time, what will be impact of this? That is important. So in this video, I will discuss that. Now, in a competitive examination, if something is difficult or out of box, it is for everyone. That means it will have negligible effect as far as selection of the candidate is concerned, because selection is based on a very basic concept that whether you have performed better than your competitor or you have performed worse than your competitor. That is very important. So if general awareness was out of box, it was for everyone. That means the most candidate will score very less than that. And who will be at disadvantage? Those have used the guesswork. The candidates, those maintained the restraint and only attempted those questions where they were sure about the answer, they will get the positive marks. But the candidates, those have trying to outsmart others and use the guesswork, they may land up with negative marks. So if you are honest and you have only attempted those questions where you were sure about the answer, general awareness section will not affect your chance of selection, because your selection will rest depending upon what is your performance vis-a-vis performance of your competitor in other four sections. How you performed in English or Hindi, whatever you opted, how you performed in reasoning, how you performed in quant, and how you performed in computer, because that will be the basic factor that will determine the ultimate merit. In general awareness, only those candidates will lose more, those have used the tukka or guesswork. And if you have not used the guesswork and you have only attempted those questions where you were knowing the answers, so there is very little chance that you may be harmed. But all those candidates, those have done better in other four sections, are definitely ahead of their competitors, because the number of candidates selected will be equivalent to the number of vacancies. So there is no need to be over upset over general awareness, although this is unfair, because if most of the questions are such that most candidates are unable to solve, it is not fair. But nothing can be done at this stage. The only solace is that if I could not perform well, others have also not performed well in that section. So it is not going to affect my selection. My selection will be dependent on those sections where I have performed better than my competitor. So what should be your strategy? Now after this, there is no phase in this competition. So you should simply keep quiet and remain focused on your future task. And future task is, if you have cleared the pre of IBPS clerk, focus on IBPS clerk main, focus on IBPS PO examination, and focus on SBI junior associate and SBI PO. So rest of the things you should try to reconcile as early as possible. And for last many years, we are not making any cutoff prediction.
So I will not be making any cutoff prediction. In my eyes, any discussion of cutoff these days is meaningless. So I only review what is happening on the ground. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। आज 2 शिफ्ट के अंदर IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मेन एग्ज़ाम हुआ। फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी कम कैंडिडेट थे, सेकंड शिफ्ट में काफ़ी थे। तो हमारे पास जो भी इनपुट्स आई हैं वो मेनली सेकंड शिफ्ट से है, उसी को बेस बनाकर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें अधिकांश कैंडिडेट्स का कहना ये था कि जनरल अवेयरनेस आउट ऑफ बॉक्स थी और बहुत ही अजीब थी, इसलिए काफ़ी लोगों ने उसमें या तो अटैम्प्ट नहीं किए हैं या बहुत ही कम अटैम्प्ट कर पाए हैं। मगर महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसका क्या असर होगा हमारी सिलेक्शन पे, क्योंकि जो चीज़ डिफ़िकल्ट है सबके लिए या आउट ऑफ बॉक्स है सबके लिए, कंपटीशन में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि कंपटीशन का अर्थ क्या है, मेरी परफॉर्मेंस मेरे कंपटीटर से बेहतर है या वर्स है। अगर मेरा कंपटीशन में अपने कंपटीटर से बेटर परफॉर्मेंस है तो मैं विनर हूँ, और मेरा वर्स है तो मैं लूज़र हूँ। तो इसलिए सारा फोकस अब रहेगा बाकी 4 सेक्शन पे। मेरी परफॉर्मेंस क्वांट में कैसी है, मेरी परफॉर्मेंस रीजनिंग में कैसी है, मेरी परफॉर्मेंस हिंदी या इंग्लिश में कैसी है, और मेरी परफॉर्मेंस कंप्यूटर में कैसी है। तो जिन कैंडिडेट्स की उसमें लीड होगी वो डेफिनेटली बेनिफिटेड रहेंगे। जनरल अवेयरनेस सेक्शंस में यदि आपने उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर किया है जहां आप 100% श्योर थे, तो आप बैलेंस्ड आउट है। क्योंकि जिन लोगों ने वहाँ तुक्के लगाए होंगे, जिन कैंडिडेट्स ने गेस वर्क किया होगा, वो वहाँ पर नेगेटिव मार्क्स स्कोर करेंगे और वो कंपटीशन में पिछड़ सकते हैं। पर जिन्होंने अपने ऊपर रिस्ट्रेन रखा, उन्होंने केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया जहां उनको आंसर आता था, तो वो कंपटीशन के अंदर हैं। क्योंकि ये कंपटीशन या ये सिलेक्शन अब मेनली डिपेंडेंट होगा बाकी 4 पेपर्स के ऊपर कि किसने किसके ऊपर कितनी लीड ली, ऐसा मेरा अनुमान है। कट ऑफ प्रिडिक्शन हम करते नहीं हैं, कई सालों से कर नहीं रहे, क्योंकि कट ऑफ प्रिडिक्शन मीनिंगलेस है, वो हम करते नहीं है। रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मकसद होता है आपको राह दिखाना कि जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट अपसेट हैं, तो मेरा आपसे सलाह ये है कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जनरल अवेयरनेस आप नहीं कर पाए हैं, आपका कंपटीटर नहीं कर पाया है, तो उसका कोई इफ़ेक्ट आपके सिलेक्शन पे नहीं आना है। उसके इफ़ेक्ट किस चीज़ का आना है कि आपका बाकी सेक्शंस में क्या लीड है। इसलिए वहाँ से आप अपना मन को शांत कर लीजिए और आने वाले टास्क में जुट जाइए। अगर आपका IBPS क्लर्क प्री पास हो चुका है तो IBPS क्लर्क मेन की तैयारी करिए। अदरवाइज़ IBPS PO, SBI PO और SBI जूनियर एसोसिएट की तैयारी में जुट जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।